where more we talk, more we discuss, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, है ना। तो अभी हम लोग जो है, अभी हम लोग धीरे धीरे उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जहाँ पे कि हम लोग जो भी हमने सीखा है अभी तक, जो भी इंग्लिश की प्रैक्टिस किया है हमने, उसको कैसे कन्वर्सेशन और डिबेट में ले जाए। ठीक है, तो आज हो सकता है कि हम डिबेट नहीं भी करेंगे, लेकिन आई वांट टू गिव यू गाइज एन आइडिया कि डिबेट और कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप डिबेट की बात करते हैं तो डिबेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? डिबेट को क्या बोलते हैं? विवाद। विवाद, हाँ। वाद विवाद। वाद विवाद। वाद विवाद, है ना। तो अगर वाद विवाद है, विवाद को छोटा सा फॉर्म में अगर मतलब स्मॉल स्केल पे देखें तो उसको एक तरह का लड़ाई भी बोल सकते हैं कि भाई बहुत विवाद हो गया, वहां पे लड़ाई झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, राइट। तो व्हाट इट मीन्स इज कि एवरी डिबेट हैज two sides of it. One is where one group of people says something and the other group of people is actually opposing that idea कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। अब मैंने कहा कि भाई नहीं नहीं जो है ना, सनलाइट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। दूसरा बोले नहीं नहीं, सनलाइट में ना बहुत इट गेट्स वेरी हॉट एंड इट एक्चुअली नो हर्ट्स यू, आई मीन माय स्किन गेट्स ब्लैक एंड देन नो इट आल्सो हैज साइड इफेक्ट ऑन योर हेल्थ इन फ्यूचर। तो हर एक पॉइंट पे एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है। एक आदमी को मीठा पसंद है, दूसरे को मीठा पसंद नहीं है। ठीक है, एंड बोथ माइट हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू कि एक मीठा क्यों पसंद है, मीठा क्यों पसंद नहीं है। लाइकवाइज अगर मान लिया जाए कि अपने देश में इतना सारा पॉलिटिकल पार्टी है, सी अगेन आई हैव नो पॉलिटिकल इंटेंट, यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि कुछ लोग होता है कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग कांग्रेस को नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं कि जस्ट मन में आया कर लिया, दे ऑल हैव देयर ओपिनियन अबाउट इट। आपको आप किसी चीज को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, उसके पीछे एक कारण होते हैं, एक थॉट प्रोसेस होता है, आपके मन में एक धारणा होती है। ओके, उसके बेसिस पे आप किसी चीज को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं कि आप किसी चीज में ऐसे विश्वास नहीं कर लेते हैं कि मुझे मैथ अच्छा लगता है, या मुझे साइंस अच्छा लगता है, या मुझे इंग्लिश अच्छा लगता है। यू डोंट जस्ट कम टू दैट कंक्लूजन, यू एक्चुअली कन्विंस योरसेल्फ। आप खुद को बोलते हो, ये सब चीज कभी सोचते नहीं हम लोग, बट अगर आप डिटेल में जाओगे तो यू एक्चुअली कन्विंस योरसेल्फ कि देखो मुझे मैथ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैथ में मुझे नंबर लाना बहुत आसान होता है, उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अच्छा, इसीलिए मुझे मैथ अच्छा लगता है। तो बेसिकली एवरीथिंग दैट यू से यू हैव एन ओपिनियन अबाउट इट। आप उस चीज को में विश्वास रखते हो बेस्ड ऑन सर्टेन डेटा पॉइंट्स। तो डिबेट भी वही चीज है। ठीक है, डिबेट भी ऐसा चीज है जहां पे कि हर कोई जो अपनी बात रखता है, दे हैव सम ओपिनियन अबाउट इट, दे सप्लीमेंट दैट विद सम डेटा पॉइंट्स। ठीक है, एंड इन डिबेट यू ऑलवेज हैव टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। एक ग्रुप जो एक एक आइडियोलॉजी में विश्वास करता है, एक एक ओपिनियन में विश्वास रखता है, दूसरा ग्रुप जो होता है वो दूसरे ओपिनियन में विश्वास रखता है। तो आप लोग को इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे सब चीज, क्योंकि जब आप लोग डिबेट करने जाओगे, नॉट एवरीबडी वुड से यस यस, हाँ हाँ जो वीरेंद्र सर ने बोला ठीक ही बोला, नहीं, दैट डजंट वर्क इन डिबेट। यू हैव टू ऑलवेज have your opinion, your data points, and you have to decide कि I'm with whom, with which group, where I feel more comfortable, where I think I can provide enough data to justify what I'm saying. अब जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि जब आप लोग पिक्चर में देखते होंगे, मतलब पिक्चर में ही, क्योंकि कोर्ट जाने का मौका हमको तो नहीं मिला आज तक कभी। जो कोर्ट में जो होता है, जो वकील लोग जाके नहीं होता है, एक 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 वकील होता है जो जो डिफेंड कर रहा होता है कि भाई नहीं नहीं, ये आदमी मुजरिम नहीं है। और एक वकील साहब होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये मुजरिम है, इसको मेरे पास सारा एविडेंस है।
So this is also a form of debate where one lawyer is believes in one thing, other lawyers believe in another thing, and whoever does a better job with supporting evidence and data points, वो केस जीत जाता है. तो केस जीतना मतलब डिबेट जीतना होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि जज साहब उसको ही मानते हैं जिसके पास ज्यादा डेटा होता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है, ज्यादा एविडेंस होता है. तो यहाँ पे डिबेट भी जब आप करेंगे, समझिए कि एक जज है, कोई आपको देख रहा है, और आप वो लॉयर हो जो अपनी बात को रखना चाहते हो विथ कन्विक्शन, विथ डेटा पॉइंट, विथ सपोर्ट. ठीक है, तो ये तो लंबी कहानी हो गई, लेकिन डिबेट आपको इतना कुछ सुनने के बाद में आपको इतना ही याद रहेगा कि डिबेट इज नथिंग बट अ केस. जो जो मुकदमा चल रहा होता है वो एक मुकदमा है, समझिए, है ना. उसमें एक आदमी जीतता है, एक आदमी हारता है, डिपेंडिंग ऑन हु हैज हाउ मच डेटा पॉइंट एंड एविडेंस. तो डिबेट और कन्वर्सेशन में अंतर क्या है? कन्वर्सेशन में यू कैन हैव द सेम ओपिनियन, कि भाई दो लोग बात कर रहे हैं कि हाँ हाँ ये जवान अच्छी पिक्चर है, हाँ हाँ हमको भी अच्छा लगा, शाहरुख खान ने बढ़िया एक्टिंग की. दूसरे ने बोला कि जो एक्ट्रेस है वो भी अच्छा काम की है, साउथ की है, जो भी है. तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा है. यू डोंट रियली हैव टू प्रूव योरसेल्फ राइट और प्रूव अदर पर्सन रॉन्ग. डिबेट में eventually it's a competitive environment. तो डिबेट और कन्वर्सेशन दो अलग अलग फ्लेवर है डिस्कशन का. एक होता है जहां पे कि वेयर all the people can have similar opinion, that is conversation, regular conversation. If there are two different groups of people having two different types of opinions, that is when it becomes a debate or is called a debate. ठीक है, अभी तक क्लियर है? तो हम 1 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑफ करते हैं, बिकॉज आई हैव टू मूव टू अनदर रूम. यहाँ पे इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल. ओके, 1 मिनट दीजिएगा, देन विल कंटिन्यू. हाँ, तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि मेरा रूम का लाइट फ्यूज हो गया था, तो इसीलिए आई हैव टू मूव टू अनदर रूम. ओके, तो जिस रूम में अभी कर रहे थे वो रूम का भी दिक्कत है थोड़ा. ऑलराइट, चलिए. तो डिबेट और कन्वर्सेशन का डिफरेंस समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन? नो सर. ओके, तो अब देखिए आज का टॉपिक क्या था. व्हाट वी डिसाइड वाज एजुकेशन वर्सेस नॉन एजुकेशन. ठीक है, तो आज जो है आज हम लोग डिबेट नहीं करने वाले हैं, बट वी आर गोइंग टू गेट आवरसेल्व्स रेडी फॉर डिबेट. अभी मान लिया जाए इस ग्रुप में जितने बच्चे हैं, इफ आई से कि व्हाट इज गुड, एजुकेशन और नॉन एजुकेशन, मतलब पढ़ना अच्छा है या अनपढ़ रहना अच्छा है. सबको आंख मूंद के बोले नहीं पढ़ना अच्छा है, कोई नहीं बोलेगा कि अनपढ़ रहना अच्छा है. दैट इज वेयर यू गो रॉन्ग, क्योंकि भाई ये तो डिबेट है. ऐसा तो है नहीं कि आज डिस्कशन करेंगे या कल से पढ़ाई छोड़ देंगे. ठीक है, तो डिबेट करते वक्त में आपको हमेशा दो तीन चीजों का ध्यान रखना है. वॉट एवर यू आर गोइंग टू डिस्कस, that is only going to be part of the discussion. That is only going to make you think with a different perspective. ऐसा जो भी आप करेंगे आपको सिर्फ सोचना है, अच्छा किसके लिए मैं डेटा पॉइंट्स कलेक्ट कर सकता हूँ, कहाँ पे मैं अपने पॉइंट्स को कन्विंसिंगली रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, किस चीज को के लिए मेरे पास ज्यादा एविडेंस है, कहाँ पे हम ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं. ठीक है, तो अभी देखिए एग्जाम्पल देते हैं. ठीक है, अब सब जैसे कि एजुकेशन वर्सेस नॉन एजुकेशन, राइट. सबको बोले कि नहीं नहीं एजुकेशन एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मैं बोलता हूँ एजुकेशन नहीं चाहिए, नॉन एजुकेशन इज बेटर. मेरा अपना वो ओपिनियन है. मेरे को लगता है पढ़ाई लिखाई से कोई फायदा नहीं होता है. डिबेट के लिए बोल सकता हूँ मैं, ऐसे नहीं बोलूंगा. ठीक है, तो अब बोले क्यों, तो बोले देखो भाई पढ़ाई लिखाई कर लिया तो क्या होगा कि मेरे को या तो मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकता हूँ, मेडिकल में जा सकता हूँ, सरकारी नौकरी कर सकता हूँ या प्राइवेट नौकरी कर सकता हूँ.
लेकिन हम खेती नहीं कर पाएंगे, मजदूरी करने में हमको बुरा लगेगा। बाकी अगर हमको कुछ नया बिजनेस करना है तो हमको होगा कि हम इतना ग्रेजुएशन पीएचडी करके हम क्या पान दुकान खोले। तो मतलब अगर हम पढ़ाई कर लेते हैं बहुत ज्यादा तो हम अपना रोजगार के साधनों को लिमिटेड कर देते हैं। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया कृषि प्रधान देश है। 70% लोग या 65% लोग खेती करते हैं। तो अगर हम पढ़ाई कर लेते हैं तो मेरा खेती करने चांसेस कम कर देते हैं। हमको लगता है इतना पीएचडी करके खेती करेंगे कि लोग क्या कहेगा। सो अगेन हम अभी आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस एनी ऑफ यू दैट पढ़ाई करना इज नॉट नीडेड, बट हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई एम सेइंग फॉर मी टू विन दिस डिबेट I am collecting points because I know everybody else will say कि पढ़ाई करना जरूरी है, तो वो लोग तो डिबेट जीत ही जाएंगे। देयर इज नो फाइट, देयर इज नो कंपटीशन एक्चुअली। तो यहाँ पे जब भी डिबेट करेंगे तो वही होता है कि आपको सोचना है कि आपको किसी में आप विश्वास रखते हो वर्सेस किसी में आप ज्यादा डेटा पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो। आप वो साइड चूज कर लेते हो। एंड इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू चूज समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल। तब जो है आप जो बोलोगे ना, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं बहुत पढ़ाई कर लेता हूँ तो मैं खेती ही नहीं कर पाऊंगा। अब खेती जो है फार्मिंग इज नो इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट हैपेंस इन आवर कंट्री। 70% of the people do farming. If I'm not, if I'm doing a lot of study, I am compromising my chances of doing farming, which is the very one of the most important part of the Indian economy. So I'm kind of disassociating myself from what is the mainstream in India. तो ये एक थॉट प्रोसेस होगा कि भाई बहुत ज्यादा पढ़ाई करते तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। नौकरी करके लोग 15,000 20,000 कमाता है, बिजनेस करे तो 50,000 कमाता है। तो आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई एबिलिटी टू अर्न मोर ऑल्सो। तो ये सब आपको हम आइडिया दे रहे हैं डिबेट करने के लिए। आप क्रिएटिव हो सकते हैं। देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट यू बीइंग क्रिएटिव एंड कलेक्टिंग सम डेटा पॉइंट्स। और डिबेट जब करने जाएंगे तो आप हमेशा सोचेंगे कि क्या क्या डेटा पॉइंट्स क्या क्या चीज हो सकता है, मतलब थीम क्या क्या होगा मेरा, उसके बेसिस पे आप लोग जो है अपना रिस्पॉन्स रेडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी ये एक्सरसाइज हम लोग करेंगे थोड़ा सा इसको। बट बिफोर वी डू दैट, तो मैंने कल आप लोगों को कहा था कि भाई आपके पेरेंट्स, माँ बाप, भाई बहन, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं घर में, अगर कोई इस क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर कोई ज्वाइन किए हैं तो बताइए। एटलीस्ट हम सबको नमस्कार तो कर ही दें। कोई ज्वाइन किए हैं किसी घर से? नहीं, अगर मतलब नहीं किया तो ऐसा उनको क्लास नहीं करना है। जस्ट वांटेड देम कि भाई आके देखें आप लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और मतलब मेरा एक बार इंट्रोडक्शन तो हो ही जाएगा उससे। वो अगर उनको कुछ पूछना है मेरे से तो पूछ भी सकते हैं कि भाई सर आप क्या करा रहे हैं बच्चों को टाइम पास। है कोई? अगर है तो ठीक है, हाथ खड़ा करके बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं है? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्टेज हैज बीन सेट फॉर डिबेट। तो आज का जो है हमारा टॉपिक था एजुकेशन वर्सेस नॉन एजुकेशन। मैंने आप लोगों को कुछ क्लू भी दिया, राइट? तो अभी आपको जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही बोलें। हम चाहते हैं कि हर कोई एजुकेशन और नॉन एजुकेशन के फॉर्म में एक एक पॉइंट बोले कम से कम। मतलब ऐसा मत कीजिए कि हम हमको एजुकेशन में बोलना है, हाँ सर एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर लाइफ। कोई मजा नहीं, सबको पता है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, देखते हैं कि से दैट इन हिंदी फॉर नाउ, इट्स ओके। आई मीन अभी डिबेट नहीं कर रहे हैं, आई एम जस्ट काइंड ऑफ waking up those neurons for you guys where you can start thinking on those lines कि भाई अच्छा अगर अगर हमको फॉर में बोलना होता तो ये दो पॉइंट बोलते, अगेंस्ट में बोलना होता तो ये दो पॉइंट बोलते। तो अभी एजुकेशन के फॉर में दो पॉइंट और नॉन एजुकेशन के फॉर में दो पॉइंट, या एटलीस्ट एक एक पॉइंट। आप लोग क्या क्या दिमाग में आता है सोचिए और मुझे बताइए। आई वॉन्ट टू हियर ऑल ऑफ यू।
And you don't have to necessarily say that in English. It's okay. I mean, मेरे को पहले आप लोग को आइडिया देना है. Yes, Can I Siddhi, बोलिए. say? Yes, please. So, a point for education is that education makes us the people, makes us more civilized. Hmm. If, rather than a non-educated or illiterate person. Mm-hmm. We get more disciplined, we get more in mannered when we educate ourselves. Okay, that is one point. And another point for non-education is that in India we see there are many homes in our village or in another village that they don't have a proper school or college to get them educated. So they don't get educated, but they still work for their living, and they most most people live happily there. Hmm. Whether they do agriculture stuff, whether they work in small shops or anything like that, Hmm. or start a business. Most of the people in my own village Hmm. are not literate to a certain level. They Hmm. are like second class pass, fourth class pass, but they're still earning a good living. Yep. So that's my point, sir. Thank you. Very nice, बेटा. बहुत बढ़िया. आपने एकदम you have hit the deck in the right place. Okay, चलिए देखिए नैतिक क्या बोलना चाहते हैं. नैतिक बोलिए बेटा. Sir, I am with non-education. Okay. So non-education or experience outside of formal education. It can be beneficial for several reasons. For example, practice skill. Hmm. Non-educational experience can teach you practical. Hmm. Traditional education, for example, cooking, Hmm. home maintenance, etc. And personal growth. Experience like travel, pursuing habits can foster personal growth, Hmm. open-minded and self-aware, Hmm. and also be networking, building relationships, and and non-education may also be creativity. Hmm. Okay. Non-educational men like art, music, sport, and other creative ideas. And he have also well-being. Yes. Well-being. Hmm. He also live always relax. And experience can provide important life lessons. Right. Okay. That's all, sir. So देखिए Natik has given a lot of points around non-education. तो देखिए नैतिक यहाँ पे नॉन एजुकेशन के बारे में आपने जितना कुछ बोला कि it gives you a lot of opportunity, lot of new things, lot of creative ways of making your living, sports, games, business, whatnot, right? Music, whatever. But if you have to talk about some of the positives of education, what are those? And it has to be different from what Siddhi said. मैं चाहता हूँ कि हर कोई कुछ नया सोचे. तो आपने सोचा है तो ठीक है, नहीं सोचा तो सोचिए. I want, see, it's about kind of exploring all the options, right? तो हमेशा आप देखिए डिबेट के लिए तैयार हो रहे हैं तो यू कैन नॉट ऑलवेज थिंक कि अच्छा मैं उस डायरेक्शन में चला जाऊंगा या चली जाऊंगा. ऐसा हो सकता है आप डिबेट करने जाओ, अब पता चला कि जो 80% जनता है एक ही उसी चीज के लिए प्रिपेयर करके आई जो आप सोच रहे हो. ठीक है, तो देन यू हैव टू रन टाइम, यू हैव टू स्विच कि चलो ठीक है, इधर इधर भीड़ ज्यादा है, मैं उस तक जाता हूँ जहाँ पे मेरा विन करने के चांसेस बढ़ जाता है, वेयर देयर इज नॉट मच ऑफ कंपटीशन, राइट? क्योंकि क्या होता है ना, मान लिया जाए जैसे कि जिस चीज की आंधी चल रही है, एवरीबडी विल टॉक अबाउट इट. यू कैन विन द डिबेट इफ यू टॉक अबाउट समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल. पीपल विल से आई हैड नॉट इवन थॉट अबाउट इट. ठीक है, ओके. तो सोच के रखिएगा नैतिक. आपने अगर सोच लिया तो बता दीजिए, नहीं तो फिर आपको बताता हूँ. आपने हाथ खड़ा किया हुआ इसलिए पूछ रहा हूँ. नो सर, अभी सोच रहे हैं. सोचिए तो. ओके, रागिनी और रौनक के पास जाते हैं.
देखें रागनी के पास क्या आइडियाज है। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's my points on first non-education. हम्म If we are non-educated, we have lack social and economic disadvantage. Like non-education can contribute to social and economic disadvantage. हम्म It can lead to exclusion from certain social networks, हम्म decreased access to resources, and a higher likelihood of facing economic hardships, हम्म and limited civics engagement. हम्म Lack of education can hinder individuals' ability to engage effectively in civics and politics. Process informed participants in democracy, understanding of social issues, and the capacity to advocate for one's right can be compared without access to education. Hmm. And my points on education: हम्म limited knowledge and skills. हम्म Without formal education, individuals may have limited access हम्म to structured knowledge and skill development. हम्म This can hinder their ability to complete in the job market. हम्म And sir, personal development. हम्म Education contributed to personal growth and development. हम्म Help individuals discover their interests, talent, and passions, Hmm. while fostering self-confidence and sense of purpose. These are points on my education and non-education, sir. वेरी नाइस। ठीक है, तो देखिए इसका अगर if you look at the summary of what Ragni said, right? It had both the things, right? I mean, she mentioned that don't look at anything on its face value. मतलब अगर आप बोल रहे हो कि हाँ एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा भी अगर हाफ गुड एजुकेशन है, दैट इज आल्सो एज गुड एज बीइंग नॉन एजुकेटेड. So that was the point that was coming out from what I heard Ragini, when I heard Ragini, right? So well done. She used some of the interesting words also, like hinder. Hinder is one of my favorite words. So good job Ragini. देखते हैं और लोग के पास क्या ओपिनियन है. क्षितिज, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? Yes, sir. Sir, I want to tell one more point about being educated. Sir, the thing in the world is the more you study, the more you get knowledge. It develops your own skill. So that's why we see in big countries and big, what can I say, industries, we have educated people on top and the less educated on the bottom working on a labor. I'm trying to say it respectfully, but working as a labor or a worker or a supervisor. Most of the people who are on the top are well educated. At least they have an MBA or a master's degree. And a point about non-education, I would also like to say that the politicians in India or another country, they aren't educated to a level they should be to be world leaders, but they are still world leaders. The sports persons like what can I say, Ronaldo, Messi, they are not, even Messi can't speak English fluently. Yep. I'm a big fan of football, that's why I'm saying. Okay, sir, Yep. that's what. I'm with you. So see, नैतिक कुछ बोलना चाह रहे हैं? नैतिक बोलिए. I heard क्षितिज.
कुछ बोलना है आपको? आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, नहीं तो मैं कुछ और क्लू देता हूँ आप लोग को। ओके, देखिए यहाँ पे अब जैसे कि अभी डिबेट शुरू नहीं हुआ है, सी दिस इज जस्ट अ प्रिपरेशन फॉर इट। ओके, अब जैसे कि देखेंगे डिबेट में क्या, शुरू में आपने कुछ पॉइंट्स सोचा कि भाई इसके बारे में ये बोलना है। अभी देखिए यहाँ पे क्षितिज ने एक एग्जांपल दिया कि इफ यू लुक एट any big country or any big company or any large setup where you have different types of people, you will see that people who are more educated, they're at the top. Now अभी ये मान लिया जाए कि आप क्षितिज के अपोजिट ग्रुप में हो, then you are convinced क्षितिज जीत करके झंडा गाड़ के उधर से निकल जाएंगे. You as the opponent for that group, you have to have your counter argument. Let's say if I'm talking against Kshitij's group in a debate, my argument would be yes, I totally agree with what you said. If you are looking at the officials, if you are looking at the working population of any company or any big country, you will see that people who have more degrees, who are more educated, they are the ones who are in the higher ranks. But think about people like Mark Zuckerberg. Think of people like Bill Gates. These were actually college dropouts. They did not finish their education actually, and they became the CEOs of the these multi-billion companies now. So if you look at the entire population, the most creative population comes from the college dropouts who felt that education system is not well groomed, qualified enough to cater to my talent. So whether you are completing your education or you are not able to do so, what you will be able to achieve depends on what your capabilities are. And you don't need a stamp from education to be successful in life. In fact, people who have done less education have proved to be more successful. Here are some of the examples. If you look at the whole world, see, I'm still adding some more points to what I'm saying, right? Look at the whole world. Here are some of the some of the professions that people get into. You can do farming, you can do sports, you can do music, you can do office work, you can think of becoming an engineer, doctor, you can become a politician, you can be a let's say an industrialist, you can manufacture some of the things, right? These are some of the broader category of jobs that people go for their living. You can be a fisherman, you can be whatnot, right? You can be a carpenter, whatever. If you look at all the professions, only a small segment, only for working in a job or working in certain industry, you need qualification. You don't need to study for being a farmer. You don't need to study for being a sportsman. You don't need to be great with your education when it comes to succeeding in a music field. So if I have to give some statistics, I can say that 70% of the profession that people do across the world doesn't need education, or it's not hard. It is something that doesn't have a hard dependency on education. So these are some of the points. I'm just throwing some of the points. Okay, I'm still not denying that education is very important. Okay, but ये सब थॉट प्रोसेस है. मतलब सी, तो जब आप डिबेट में जाओगे तो जैसे क्षितिज ने कहा कि भाई पढ़ाई करने से ये होता है, तो एज अ टीम गिविंग अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू गेट योर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स रेडी इन पैरेलल टू दैट. और आपको सामने वाले के पॉइंट में से ही कुछ पॉइंट निकालना है जहां पे कि आप बोल सको कि हाँ भाई आपने बोला तो अच्छा, लेकिन उसका आप ऐसे भी सोचो अगर, तो these are the some of the things that you have not taken into consideration, and that is what you are believing that you are right. तो ये कुछ एग्जांपल्स था. अभी और सोचिए. आई वांट टू हियर मोर फ्रॉम यू गाइस. और सोचिए कुछ. अगेन, यू डोंट हैव टू से इट ऑल इन इंग्लिश विद ऑल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस. आज के क्लास में हम लोग सिर्फ डिबेट के लिए कैसे अपने आप को अलाइन करना पड़ता है, हाउ डू वी काइंड ऑफ स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोस लाइंस टू काइंड ऑफ आर्ग्यू, काउंटर आर्ग्यू एंड विन अ डिबेट. ओके, अभी ये सिर्फ तैयारी करा रहा हूँ, डिबेट शुरू हुआ नहीं अभी तक.
और कुछ आइडिया आता है? कोई कुछ बोलना चाहेंगे एजुकेशन नॉन एजुकेशन के बारे में? And you have to be creative. That's the thumb rule, okay? कि डिबेट में जब जाते हैं आप ना, तो वहां पे कोई ये नहीं देखता कि आपका अंग्रेजी कितना पॉलिश्ड है, आपके पॉइंट्स कितने दमदार हैं। चलिए और सोचिए और देखिए किसके पास क्या क्या मसाला है। क्षितिज है सम मोर पॉइंट्स, देखिए आइडिया आ रहे हैं। बोलिए क्षितिज। Sir, I want to speak for non-education. ओके Yes, sir. I am gonna talk about mostly about the Middle East and the African continent, or the what can I say? I don't have a word. Can I go for that word in Hindi? हाँ चलिए ना। जो बहुत ज्यादा पिछड़े राज्य होते हैं हिंदुस्तान के या फिर बिहार के, हाँ अंडर डेवलप्ड प्लेसेस ऑफ जगहें हैं जो बहुत ज्यादा पीछे हैं, अंडर डेवलप्ड प्लेसेस like what can I say, Champaran side, they don't have a specific kind of education policy, and mostly in Africa they don't have money to buy water. How can they get education? So still most of the people are living a happy life, living a very good natural life. And in the Middle East, most of the people aren't studied enough, but they still earn in millions because of the oil refinery and working in the oil sector or anything else. I am not saying that they don't have they are solely not educated. No one from there is on a big scale of big group of company, no, but they are not, their education is not up to the mark, but still they are living a happy life and contributing in the in their country's GDP and anything you can say. Thank you, sir. That's what. बहुत बढ़िया। देखिए I really get excited by talking to you guys, okay? So I don't think I ever was in a position to talk about the thing that you guys do. GDP का बात आप लोग कर रहे थे स्कूल में ही, मेरे को तो कॉलेज जाके समझ नहीं आता था वो सब चीज। So I'm very impressed with the level of maturity that you guys have at such a young age. Maybe it's because of generation gap. Maybe it's because of the exposure that you guys have, or maybe because you guys have some unique skills that I never had. But very happy. बहुत बढ़िया बेटा। चलिए रुद्रा देखें क्या बोलना चाहते हैं। रुद्रा। हेलो सर, आई एम साजिद। अच्छा जीत बोलिए। सर रुद्रा का तबीयत खराब है इसलिए हम बोलेंगे। बोलिए बिल्कुल बोलिए। I want to say that education offers numerous benefits in our lives. Like example, knowledge and बोलिए भाई। sorry sir, network problem. हाँ कोई बात नहीं, बोलिए। Knowledge and skills. It's provide with knowledge develops essential. क्या हो गया आपको, कोई छेड़ रहा है? मजाक नहीं, प्लीज बी सीरियस। सर रुद्रा ही है। ओके नहीं ठीक है, कभी कभी मजाक करना है ओके, बट आ जाइए वापस। It provides us knowledge and career opportunities. Education opens a wider range of career opportunities. Personal growth, self-awareness, and critical thinking.
social interaction. Education fosters social interaction, networking, and the development of lifelong friendships. Problem solving. It enhances problem solving abilities, enabling individuals to make informed decisions. Civic engagement. Lifelong learning. Education instills a love for learning, encouraging continuous personal and professional development throughout life. encouraging, हाँ ठीक है। Thank you, sir. That's all. देखिए आज हम लोग कुछ कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं किए, ठीक है, एंड दैट्स ओके, परफेक्टली फाइन। तो आज हम लोग सिर्फ वी आर जस्ट अलाइनिंग आवरसेल्व्स टू गेट रेडी फॉर डिबेट्स, कि हम डिबेट करते हैं तो कैसे करते हैं, हम अपने पॉइंट्स कैसे सोचते हैं, सामने वाले का पॉइंट्स में से अपने लिए पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। लेट्स से यू स्टार्टेड इन सपोर्ट ऑफ अ टॉपिक एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू फील लाइक कि नहीं सपोर्ट में नहीं, हमको अगेंस्ट में जाना है, एंड इफ यू डू दैट एट रन टाइम यू हैव लॉस्ट द बैटल। तो आपको यू हैव टू स्टे काम एंड कंपोज। डिबेट में बहुत सारा टाइम में क्या होता है कि लोग भिड़ जाते हैं, पीपल स्टार्ट शाउटिंग, डोंट डू दैट। डिबेट का मतलब चिल्लाना नहीं होता है। जो हम लोग जो टीवी में देखते हैं वो डिबेट नहीं है। डिबेट इज समथिंग which requires you to be calm and composed and be equally convincing, कि आप जो बोल रहे हो you are saying that in a way that you strongly believe in without making noise about it। क्योंकि आप जो बोल रहे हो अगर इसमें मसाला होगा, if that has no points to buy, people will buy those points। You just have to do that in a more structured, disciplined and composed way so that people find that it's convincing rather than being a noise। ठीक है, तो ये है हमारी तैयारी इसके लिए। सत्यम कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा। Sir, I speak educational and non-education lastly fourth fifth lines. So education can provide you with the theoretical knowledge and to perform a job, and non-educational allow you to put this knowledge into practice. And more important, experience is as important as knowledge. And both are the very best way to keep going forward every single day. So, sir, experience comes with time, exposure, and practice. And knowledge, on the other hand, is founded upon the information through either experience or education. That's all, sir. Thank you. देखिए यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ऐसे मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट सत्तर में जो कहा सब सारा कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन इसमें से एक कैची चीज देखिए, डिबेट का वही होता है कि जब आप बोल रहे होते हैं ना, आपने 5-6 पॉइंट बोला, उसमें से एक पॉइंट इतना पावरफुल होता है दैट स्टील्स द शो। ठीक है, मतलब वो पूरा क्या बोलते हैं, पूरी पब्लिसिटी ले जाता है वो। जैसे यहाँ पे सत्यम का एक पॉइंट मेरे को अच्छा लगा, he said that education enables you with some information and non-education helps you put that to practice। कि भाई पढ़ाई आप कितना भी कर लो, जो बिना पढ़ाई वाला काम है, that is when you are able to whatever you learn you can put that to practice through non-education only। कि मान लिया आपने बहुत पढ़ाई किया कि भाई फार्मिंग करने के लिए इस महीने में इतना, इस मिट्टी में इतना खाद डाल के इतना बीज डालेंगे तो होगा। करेगा कौन? साइंटिस्ट। जो नहीं पढ़ा, जो कम पढ़ा लिखा आदमी वो करता है, या फार्मर होता है वो करता है। या पढ़ा आपने भले कितना हो, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का में इम्प्लीमेंटेशन में इट्स डिफरेंट, राइट। दैट्स व्हाई वंस यू डू अ डिग्री, राइट, उसका आपको सर्टेन वेटेज मिलता है कि भाई आपके पास नॉलेज कितना है। बट व्हेन इट कम्स टू पिकिंग पीपल फॉर जॉब, दे आस्क हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव। So knowledge is just a gateway, but your experience is more valued, which
may or may not be very much related to education. है ना? चलिए, बहुत बढ़िया पॉइंट्स है. देखिए, और रागिनी रुद्रा ने हाथ खड़ा किया है, फिर आंचल ने भी हाथ खड़ा किया है. सुने उनकी बात भी. रागिनी, यू वांट टू से समथिंग? रागिनी या रौनक, जो भी है. Sir, first, we all know it very well that education is very important. With education, we can achieve a lot of things, but without education, we can't achieve anything. So, sir, I want to please say something about non-education. Sir, please you say something about non-education. Okay, so see, you said that with education we can achieve a lot of things, but without education we can't do much. Yes, sir. I know that education is very, very important. That's why we are talking, right? हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए because we, you find that I do have some knowledge, some experience, and that is why you found me qualified to even spend your 1 hour every week, right? So education is needed. अगर आपको पता होता कि this guy is not literate, you would have not even bothered to talk to me. So the education is needed. But now, what I'm trying to say here is, education is not everything. Education, if you're non-educated also, if people who are non-educated, that's a large percentage of the whole society. Be it any country. You come to US, you will find, you come to US, you'll find that 60% of the people are not even graduates. But are they making their living? Yes, they are. There are people who have excelled well in their different fields. There are people who are doing only music, no education. They are doing very good. There are people who are doing sports, only sport. No problem. They are doing very good. They are successful. They are rich. They have everything that they need. They are farmers who are not educated. They have a lot of farms. They are doing a very effective way, making a lot of money, living a happy, respectful life. So that is why education is good, but this is not everything. That's what I was trying to say. So just imagine any class 1 intelligent girl and boys come in school and he gave any top questions answer, and all the students give respect that person. But one very uneducated person was come in that class, all the students irritated him. So what do you think about in this situation? So see, if we are talking only with respect to class, yes, what you said is right. That if you are in a setup where it's all about studies, obviously educated people will get more weightage. But what we are not thinking is that girl or the boy who is not educated but plays flute very nice, उसको बांसुरी बजाना बहुत अच्छे से आता है. Imagine that kid's situation. Class में 10 बच्चे हैं, somebody who is very intelligent will get respect from remaining 9 kids. Think of that kid who plays very good flute. इतना अच्छा बजाता है कि पूरा गांव के लोग उसके पीछे उसको सुनने के लिए आ जाते हैं. So sir, we are talking about education, not art. No, I'm saying, so that's what I'm saying. See, my point was education versus non-education. So I'm not saying that when you have to study, is non-education better? No, we're not saying that. I'm saying that education is very good for certain segment where it needs education. Let's talk about Usain Bolt, who was the fastest runner who has ever been born on earth till date. Do we know how educated he is? Or do we need to know even? Sir, who are you talking about? I wasn't able to listen. I was talking about Usain Bolt, the fastest sprinter on earth from Jamaica, who still holds the record for least time taken for 100 meters, 200 meters, and probably he has 8
7 or 8 gold medals, Olympic gold medals to his name. तो ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे डिबेट चलता रहेगा सर, मैं कोई जीतने हारने वाला बात नहीं हुआ है, बट आई एम एक्चुअली मेकिंग यू गाइस थिंक कि जब डिबेट पे आप करने जाएंगे, यू हैव टू, what you believe in is one part, and you have to always think where I can add or collect more data points to make my speech more convincing, make my points more convincing. ठीक है, तो चलिए अभी we are inching towards end of this session. Let's see if Achal has something to say. Achal, कुछ बोलना चाहेंगे? Good evening, sir. Good evening, बेटा. Today's my point is education and non-education. Education is the knowledge and gaining of something is development. Non-education is a gaining, nothing is development. Thank you, sir. Okay. चलिए अभी सुन लिया बात, बट इतना भी बात होगा नहीं, डिबेट में जब जाएंगे तो we'll have more to talk about. रुद्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग बेटा. Sir, I have 2 points about non-education. My first point is farmers are non-educated, but they are necessary for us. And my second point is we all know that farmer can harvest grains. If everyone becomes a doctor and engineer, then who will harvest grains? The grains will not be eaten by us, or the doctor will not eaten. The doctor will not even get to it. हाँ. Thank you, sir. तो देखिए आंचल ने एकदम हथौड़ा मारा जोर से एकदम कि भाई पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, जिंदा तो रहना पड़ेगा पहले. अगर फार्मर ही नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, अगर फार्मर नहीं होते, एजुकेटेड हो या नहीं हो दोनों केस में, तो अगर अनाज ही नहीं होगा तो हम लोग जितना भी बात कर ले, हमारा सर्वाइवल रिमेन्स अ क्वेश्चन मार्क, राइट. चलिए रुद्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. रुद्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं? Hello, sir. बेटा. Education offers a wide range of benefits in our lives, including as enhanced knowledge, critical thinking, career opportunities, improved communication, personal development, social interaction, and innovation and progress. Education instills a love of learning, encouraging and professional development throughout one's life. तो देखिए आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है. और रुद्रा, आई कैन सी दैट यू, सत्यम एंड साजिद आर इन अ प्लेफुल मूड एंड विच इज परफेक्टली फाइन. मतलब ठीक है, थोड़ा खेल कूद हंसी खुशी में हैं. नहीं देखिए मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. ठीक है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो, इफ यू आर एंजॉयिंग इट, राइट. अब ठीक है, पढ़ाई के बीच में अगर इतना सीरियस बना के मुंह बने बैठे रहेंगे तो उसमें मजा नहीं आता है. थोड़ा थोड़ा प्लेफुल होना इज परफेक्टली फाइन. ठीक है. ज्यादा मजाक करता है सर. हाँ, तो इसलिए नथिंग रॉन्ग विद दैट. ओके, मेरा प्रॉब्लम भी है ऐसा लाइफ में. ऐसा होता है कभी कभी हंसी आने लगती है, फिर रोक नहीं पाता हूँ, तो इट्स परफेक्टली फाइन, इट्स ओके. उसको लेकर इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन सी आज अभी लेट्स कंक्लूड दिस क्लास नाउ. आज हमने जो भी किया, दिस वाज नथिंग रिलेटेड टू डिबेट. वी जस्ट started aligning ourselves. First thing first was we understood what is the difference between a debate and a conversation, and then we started thinking कि हाँ debate के लिए क्या करना होता है, what are the pros and cons that we have to think of, अपनी तैयारी कैसे करनी है डिबेट के लिए. that those are the things that we talked about, है ना. तो अब जैसे gradually we'll start कोई बात नहीं. तो gradually we will start getting into a debate mode. तो अगला जो हम लोग संडे को क्लास करेंगे उसमें हम लोग विल डू अ मिनी डिबेट. मतलब
हर किसी को 2-2 पॉइंट बोलना है। मैं टॉपिक दूंगा, 2 या 3 पॉइंट सोच के रखना है। आपको ग्रुप चूज करना है कि भाई मैं इस साइड में हूँ, मैं ये पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट आपको सोचना है जो उस टॉपिक के सपोर्ट में बोलेंगे, और 1 पॉइंट आपको रन टाइम पे सामने वाला बोला उसको काउंटर करने के लिए, हाँ तुम ऐसा बोल रहे हो, इसके बदले में ऐसा सोच सकते हैं क्या। सो दैट इज व्हाट विल डू। इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू बिगिन विथ, ओके, क्योंकि इट डजंट कम नेचुरली, थोड़ा थोड़ा फाइट होता है शुरू में, बट जैसे जैसे पार्टिसिपेट करते जाओगे यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो हम लोग फिर वैसे करेंगे, फिर दो डिबेट एक कन्वर्सेशन, 2 डिबेट एक कन्वर्सेशन, उस साइकिल में चले जाएंगे फिर, ठीक है। दैट इज व्हाट विल डू, एंड आई एम श्योर ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट, ठीक है। तो बस आज का सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड देन विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय बच्चों, चलिए टेक केयर, Thanks, sir. Very चलिए बाय, चलिए बाय बाय। Best, sir.